हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम एडीआर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एडीआर बेसिकली क्या होता है? फुल फॉर्म है इनकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये इशूड करते हैं यूएस मार्केट में। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे जीआईबी में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इनसे हमें काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीआर रिप्रेजेंट क्या करता है? फॉरेन कंपनीज को, शेयर्स को जो ट्रेड होते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में। बेसिकली क्या है, जो यूएस की कंपनीज है जिनको पैसा चाहिए, वो एडीआर के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं। एडीआर आर ट्रेडेड मेनली ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनवाईएसई और नैस्डैक। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस पूछ लिए कि जहाँ पे कि यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ पे ट्रेड होते हैं एडीआर्स। फ्रेंड्स, ये सारे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो काइंडली इन्हें जरूर देख लें। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एडीआर्स आर इशूड बाय द यूएस डिपॉजिटरी बैंक। अंडरलाइंग शेयर्स ऑफ एडीआर्स आर हेल्ड बाय the custodian bank in the company's home country. ADRs are denominated in the US dollars. फ्रेंड्स, ये सब जो पीडीएफ वगैरह हैं सभी ग्रुप में शेयर हो चुके हैं, तो इनका प्रिंट आउट लेके भी पढ़ सकते हैं। एडीआर्स हेल्प फॉरेन कंपनीज टू एसेस यूएस कैपिटल मार्केट्स। एडीआर्स को रेगुलेट कौन करता है? इंडिया में आरबीआई अंडर फैमा गाइडलाइंस। एडीआर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑनलाइन शेयर्स बाय इंडिया होल्डर्स कैन। Which risk is borne by ADR investors? तो ये है करेंसी एक्सचेंज रिस्क। Dividend on ADR is paid in US dollars. Not the benefit of ADR, that is strict US disclosure norms. ADR suit large और well established companies को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Infosys was one of the early Indian ADR issuers. ADR is an example of falling depository receipts. डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं? सर्टिफिकेट होते हैं जो कि इशू करता है डिपॉजिटरी बैंक, रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन फॉरेन कंपनी शेयर्स। एडीआर अलाउज यूएस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज। एडीआर्स मस्ट कंप्लाई विद द यूएस एसईसी रेगुलेशंस। जीडीआर क्या है? प्रोसीड्स रेज्ड बाय इंडियन कंपनीज आर ट्रेडेड एज फॉरेन करेंसी कैपिटल, नॉट ईसीबी और डेट। एडीआर रिड्यूसेस सेटलमेंट एंड ऑपरेशनल रिस्क। Dividends on ADR is paid in US dollar after conversion by the depository bank. The custodian bank in the issuer's home country holds the shares on behalf of the depository bank. Level 3 ADRs involve public offering and listing on US exchanges like NYSE or NASDAQ. Which ADR level requires the highest disclosure? तो ये है level 3 वाले को highest disclosure चाहिए होते हैं। ठीक है। GDRs are usually issued through public offering in international markets. ADRs are specific to the US market while GDRs are global. When ADRs are converted, ADR units reduce but total equity remains unchanged. ADR dividend taxation is governed by the double taxation avoidance agreement. ADR या GDR cannot issue. Government of India cannot issue ADR या GDR. डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट एडीआर प्राइस, तो ये है एक्सचेंज रेट वगैरह से अफेक्ट नहीं होगा। जीडीआर इन्वेस्टर्स यूजुअली बिलोंग टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एडीआर में जीडीआर को कौन रेगुलेट करेगा? आरपीएफ एंड सेबी गाइडलाइंस। एडीआर्स डू नॉट एलिमिनेट रिस्क मार्केट या करेंसी रिस्क स्टिल एग्जिस्ट वन जीडीआर में रिप्रेजेंट वन और मल्टीपल इक्विटी शेयर्स। Primary objective is raising foreign currency funds and gaining global presence, that is ADR. फ्रेंड्स, एक क्विक मेमोरी के लिए जो है एक छोटा सा ये चार्ट जैसा आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एडीआर जो अमेरिका एसईसी रेगुलेट करेगा और ये यूएस डॉलर में होते हैं। ठीक है। अब जीडीआर क्या है? जीडीआर ग्लोबल होते हैं, लंदन या लग्जमबर्ग यूएस डॉलर या यूरो में होते हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ADRs are primarily meant to facilitate investment by foreign companies. GDRs are denominated in INR, Indian rupees में होते हैं GDR. ADRs are issued by a US depository company. Custodian for ADR GDR is issuer home company.
Level 1 ADR are traded as over-the-counter market. ADR involves fresh capital issuance, public issue plus capital raising. GDRs are generally governed by the RBFM regulations. GDRs represent equity ownership, not debt. Currency risk arises due to forex fluctuations. In the case of DRs, dividend on GDRs be paid in foreign currency before payment. कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. GDR ADR do not eliminate risk. रिस्क तो इनमें भी है. एक्सचेंज रिस्क होता है. Only eligible corporates can issue DRs. ADRs are classified into 3 levels. Unsponsored ADRs are initiated by depository bank issues unsponsored ADRs. Sponsored ADRs need company participation. GDRs increase liquidity of shares in improve international liquidity. ADR holders receive annual reports prepared as per US GAAP or IFRS reporting. Which of the following is not true? Dividends are not guaranteed. GDR issue proceeds are kept in foreign currency accounts. USA first market to introduce ADRs. ADRs can be converted into underlying shares. Voting rights of GDR holders are exercised by depository bank. Factors is ADR demand, that is company performance. DR mechanism helps in avoiding settlement and custodian issues. Not a ADR that is level 4 नहीं होता, इसमें level 3 तक है. GDR investors bear which tax implication that is governed by double tax avoidance agreement. Level 3 and level 3 ADR में जो है maximum disclosure होगा. ADRs provide access to US capital. ADRs are US specific. Which exchange rate affects ADR pricing, that is US dollar INR. GDRs target global institutional investors. Which law governs one exchange aspect of DRs in India, that is FAMA governs forex transactions. DRs enhance global visibility and brand. Market risk always exists in ADR issuance, which is not required for ADR issuance, that is no RBI guarantees involved. GDR issue does not dilute, promoters may retain control. ADRs are settled as per US settlement rule. DRs help in portfolio diversification for investors get international exposure. This document is mandatory for level 3, that is SEC registration. GDRs are mostly issued through public issue overseas. Biggest advantage of DRs of companies की foreign capital access मिल जाता है उनको. ADR holders names appears on the names are recorded with the depository bank. GDR conversion into shares increases shares in domestic market. Which body approves ADR listing in US exchanges, that is US SEC regulates ADR listing. DR mechanism reduces which barrier? DR reduces regulatory and settlement barriers. GDRs are traded in European trading hours. Ultimate ownership in ADR या GDR lies with the investor and the beneficial owner. हो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में से कोई कुछ क्वेश्चंस आपको JIBC हैवी के एग्जाम में मिलेंगे. बाकी आप तैयारी करते रहें और हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.